नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, आशा है आप अच्छी तरह होंगे। एनसीआर में ठंड की यदि ज़्यादा से ज़्यादा ठंड पड़ रही है, सो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फ्रेंड्स, एसबीआई बैंक पेंशनर के बारे में जो दिल्ली हाई कोर्ट में जनवरी में केस लगा हुआ है, उस संबंध में श्री कॉमरेड उमेश शर्मा ने अपडेट्स दिया है और उस अपडेट्स को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मीटिंग विथ यस साईं राज दीपक एडवोकेट 20 December 23। डियर ऑल, lot many friends have asked about the agenda of our proposed meeting tomorrow। यानी कि 20 तारीख को यह मीटिंग संपन्न हुई थी। We three, namely श्री मनोहर लाल, ए सुब्रमण्यम एंड योर्स फेथफुली यानी कि कॉमरेड उमेश शर्मा आर शेड्यूल्ड टू मीट श्री साईं जे साईं दीपक एंड हिज टीम हैंडलिंग आवर केसेस बिफोर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट इन हिज चैम्बर एट 1:20 PM। Sri J. Sai Deepak, being very busy advocate, has agreed to plead our case for retrospectively effect to the issue of 50% only. Issue of pension updation and the retrospective effect to 100% DA neutralization shall be pleaded by Dr. Jose Varghese, senior advocate। यानी कि 3 जो डिफरेंट केसेस हैं, वो एक तो जो 40 to 50% हुआ है एसबीआई बैंक पेंशनरों को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मिलने के लिए, दूसरा पेंशन अपडेशन और तीसरा 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन जो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से मिलने की बात है। वी आर ट्राइंग टू एंगेज श्री आर्यमन सुंदरम, सीनियर एडवोकेट एससी एज वेल। वी हैव प्रोवाइडेड ऑल द मटेरियल टू हिज टीम एंड अवेट his response। As already informed, the foundation of our case is very strong, since it is based on the constitutional provisions and SBI Act 1955, beside various order of Honorable Supreme Court, which are specific to SBI. Incidentally, our cases have been classified under categories, namely constitutional and service matter, and being classified as such assume lot of importance in brief. Article 12, 14 of Constitution and Section 54 of SBI Act of our strength. Article 12 says any institution created by parliamentary legislation is a state. State Bank of India, being a state, can not act unfairly. In the context, the most recent order of SC R.S. Pandey versus SBI, paragraph 14 clearly established that the bank should act fairly as a state having been established under Article 12 of the Constitution. Therefore, all its actions like paying family pension at 3 different rates, 15, 20, 30%, paying DR to pensioner at different rates, and paying pension to a section of the pensioner at 2 different rates are unfair and are unconstitutional and acts of constitutional impropriety. Also, gross violation of Article 14, framing discriminatory rules so as to deny fairness to a large section of its citizen pensioners. Section 50, Clause 4 of SBI Act is a protective clause added to the Act in 1998 by the Parliamentary Resolution Amendment to place a check on the rule-making powers of the bank's board and directors by ignoring this. The amendment to pension regulation in 2004 and implementing it from retrospective date, that is the 1st March 1999, again a violation of the SC ruling that accrued rights cannot be taken away, R.S. Pandey versus SBI. Read the general principle of law that the accrued rights cannot be denied or snatched away. The DFS directives to the implement the 50% pension retrospectively cannot be denied. As far as
issue of pension updation is concerned, it's based on SC order of 1998, V. Kasturi versus SBI, page 16, which has not been challenged by the bank and not complied with also even after 25 years. Our case are based on the constitutional provisions and cannot be overlooked. We would discuss all these points with our learned advocate and report back to the feedback. I also express my heartfelt gratitude to all of you for generous financial support to enable us to carry on with the mission entrusted to us by our mentors, late Sri P.P.R. Upadhyay and late Sri V.C. Mehrotra. We shall soon publish the cumulative collection amount for information and assure utmost transparency in our mission. Thanks and regards. Manohar Lal, New Delhi, A. Subramaniam, Hyderabad, उमेश शर्मा, मेरठ, ग्रुप ऑफ पेंशनर। ये डिटेल इन्होंने भेजा है, अपडेट किया है कि कौन कौन से एडवोकेट इसको प्ली कर रहे हैं और हम किन किन पॉइंट्स पर इसको डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जब 20 जनवरी को ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में पुटअप हो तो हम अपने पूरे टूल्स के साथ उपस्थित हों, ताकि SBI बैंक पेंशनर के बारे में जो भी डिसीजन लिया जाए वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लिया जाए। और खासकर से यहाँ पे मुद्दा पेंशन अपडेशन का भी है, और अगर पेंशन अपडेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए कोर्ट कोई जजमेंट देगा तो नेचुरली इट विल बी अफेक्टेड फॉर द अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।